Okay, so now we are going to start a mock interview for our student Nitish Kumar, and this interview is for the post of assistant professor in BPSC, and he is from mathematics background. So, first of all, tell us about your educational details. Okay, sir. Okay. Yeah, so sir, actually, I completed my graduation degree, means BSc degree in mathematics from Motilal Nehru College, University of Delhi. And in 2018, I completed my master's degree from Zakir Hussain College, Delhi University. And then after, I took admission in IIT Jammu for PhD degree. And then I came back to IIT Delhi for completing my coursework. And after this, I came back to IIT Jammu. And along with my research activity, I was taking tutorial from last 2 years of B.Tech students. तो आपने PhD में तो कंप्लीट कर चुके हो आप? No, sir, I'm still in PhD. Okay, I'm still pursuing my PhD. अगर आपका ये जॉब लग जाता है तो PhD को कैसे मैनेज करोगे आप? क्या करोगे उसके साथ? Yeah, so I already talked with my professor, with my supervisor, and he suggested me that if I will, by the grace of God, if I will get a chance for assistant for this post, so I can continue with this post because I already published 3 papers. Means not published, I already sent my. So it is in final state. That is, I took admission in 2019. Okay, and now I'm in 4th year. So in July, my 4th year will be completed. So that I can, most probably I will finish my PhD this year. So आपने 3 papers publish किए हैं अभी तक? Not sir, I sent it. Okay, तो किस topic के I ऊपर है? sent it क्या last. title papers का? Okay, so the title is inverse problem. Inverse problem, which is a branch of analysis and PD setup. So in should I tell this thing or? Yeah, one paper and another papers. Okay, so actually the problem is like determining this coefficient of, suppose I have given any differential equation for simplicity. Okay, so this differential equation will have some coefficient, and my work is to find this coefficient based on the information given on this data. So for example, what is the application of my paper? Let me tell about this thing. That is, we saw so many real life problems like a doctor is using seismograph, a doctor is using a stethoscope. So he is passing some wave from the surface to inside our body. Okay, and then then the waves they are getting when they collapse with some internal part, and then they are coming back. So we are recording these waves, and based on this we are expecting that inside such type of things are there. So in this setup I am doing also, in this setup my work is going on like we have some data on the surface and we are passing some wave, and then we are किसी सॉफ्टवेयर की, किसी प्रोग्रामिंग की भी हेल्प ले रहे हैं? No sir, it is completely theoretical. नहीं, तो डेटा आपके पास आ रहा है तो उसको कैसे यूज मतलब किया जा रहा है? Okay, so actually sir, in the differential equation, so let me be more precise. That is, for example, if I'm considering some wave equation, okay, so we have some initial condition, okay, that at time t equal to 0 we have some given function, and also at the surface, at the at the boundary of the surface or boundary of the domain, we have some data. So based on this data we are trying to find our suppose coefficients. we have a wave equation, right? Okay, so yes, how we can solve that? What are the different methods to solve wave equation? Okay, so basically sir, okay, so we have a wave equation and how we can solve it. Can you write so a there wave are so many equation? ways. Any wave equation can you write? Okay sir. This one. Let me share the screen.
Is it visible to? Yes. Okay, sir. Okay, so let me write L2 square minus. So I'm writing this wave equation. So I'm taking some non-homogeneous wave equation. So before this, okay. So let me define. So let omega is a subset of Rn and be any. Okay. Suppose you are going to teach wave equation in your class. Okay. Okay. So how will you teach? Okay. Okay. So suppose I'm going to teach wave equation. So consider, let this is a wave and along time t, and this is my x, and the point is correspondingly uxt. So actually, sir, I prepared for some different subject, that is analysis and so actually. What you were telling us about this, no? Yes, sir. You have published a paper on this, means you have sent No, paper I'm on not this. published, but I You sent. have Yeah, sent I paper, sent. no? So it means you have worked on that, Yes, no? sir. Okay. So actually, sir, my work is based on the analytical setup of this problem. So But if you don't know the wave equation, suppose, if you are not able to I explain know the the wave wave equation, equation. then how you can use that? Sorry. भाई आपको वेव इक्वेशन अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, पढ़ा नहीं सकते हो बच्चों को, तो आप ये बताइए कि आप इसके ऊपर आपने काम किया है, वो कैसे पता चलेगा कि जेन्युइन काम किया है आपने या इधर उधर से उठाया है सारा काम? क्योंकि पेपर में अगर आपने कुछ भी एफर्ट्स डाले होंगे तो डेफिनेटली आपने प्रिपेयर किया होगा ना? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you are not confident in this? So yeah, actually, I'm confident in analytic, means in some pure mathematics setup, like So analysis and the do you know, calculus of the आपको things. पता है क्या क्या टॉपिक्स आप आपको पढ़ाने हो सकते हैं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं, तो क्या क्या चैप्टर्स वहां पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसके बारे में आपने कुछ स्टडी किया? जैसे मैंने ना सर वहाँ पे अभी जैसे प्रेजेंट में मैं ट्यूटोरियल ले रहा था, तो मैं वहाँ पे एनालिसिस में कंटिन्यूअस डिफरेंशियल लिमिट एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव और कुछ पोर्शन लीनियर अलजेब्रा के मैंने पढ़ाया है। ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बताओ। चलो ठीक है, वही पढ़ा हूं मैं। ओके ओके सर, या so let me define why directional derivative is important and how it comes. So firstly, we have differentiability in one dimension. Okay, so f is defined some a to r. So this is a real value. So definition of this derivative in one dimensional is that limit f of x minus f of c upon x minus c is equals to plus c. Suppose my f is differentiable at c, so we have this definition. Okay, and if I'm talking about some line that is along this line, we have only two directions. But when we are going for this directional derivative, so our domain A is a subset of R2. Okay, it might be subset of Rn also, there is no problem. It might be subset of Rn, but in simplicity, for simplicity, I'm taking n equal to 2. In that case, suppose I'm taking any point C. So I have so many paths for reaching this point C. Okay, so this is my point C. So I have so many paths, there are so many paths for reaching x naught, y naught. Okay, so there are so many paths. So let me take some particular path. That is, I'm taking this path. Okay, so along this path, I'm taking some unit vector. In fact, there are so many unit vectors by which we can approach this path. For example, one can take this path also. There are so many paths. So I'm taking for simplicity u1 and u2. So this is my unit vector. Okay, so along this unit vector,
that is, suppose this unit vector is u1 and u2. So along this unit vector, I am defining the directional derivative, that is limit t tending to 0 f of x naught comma y naught plus t times u1 comma u2 minus f of x naught comma y naught divided by t. Suppose if this limit exists, okay, then we can say f has directional derivative at u in the direction of u at the point x naught y naught. So basically, when this limit exists, we can say f has directional derivative at the point x naught y डायरेक्शनल naught डेरिवेटिव in the मैक्सिमम किस direction. डायरेक्शन में होता है? Yeah, so the maximum directional derivative will be, so what, okay. So before this, let me tell one more thing. If I'm looking at, suppose my function f is differentiable. F is differentiable at some point x naught, y थ्री naught. वेरिएबल का फंक्शन Okay. है, थ्री वेरिएबल फंक्शन है कोई, So, yes sir. ठीक है, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, Okay. ठीक है, तो इसके ऊपर किसी पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे डिफाइन किया जाएगा बताओ? F is a function from R3. थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड का. Yes sir. Yes sir. Yes. और इक्वल टू सी है, एक सरफेस बनी, तो Yes. सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट लिया, एक वेक्टर लिया, तो उस वेक्टर की Okay. डायरेक्शन में उस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है? Okay. So limit t tending to 0. Suppose I'm taking a point x p naught. Okay, p naught plus t times a vector u minus f of at p naught divided by t. So I can write it if suppose my function is differentiable. So I can write it as t of f at p naught into the this product with vector unit vector u. So where u is the unit vector. तो आप किस डायरेक्शन में निकाल रहे हो यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव? Okay, so I am taking this directional derivative in the direction of unit vector u, and if I wish, okay, so duf at तो p इसकी naught. वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कितनी होगी ये बताइए? Okay, so if I'm looking at the dot product, so it is defined as d of f vector u modulus of vector u into the cos theta. So this directional derivative will be maximum when cos theta will be maximum, and the maximum of cos theta will occur when theta equal to 0. If I'm taking theta equal to 90 or pi by 2, so it is going to be minus. And if I'm taking theta equal to pi, that is 180, so I am getting a cos minus थीटा का of ग्राफ बना के this, दिखाओ जल्दी से. cos थीटा का ग्राफ बनाओ. अच्छा ये बताओ कि आप पीएचडी कर रहे हो, आपने आईआईटी से पीएचडी कर रहे हो, ठीक है? तो आप आईआईटी के अंदर या एनआईटी के अंदर भी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो ना? yeah, of course, sir. तो स्टेट के अंदर क्यों आना चाहते हो आप? बट आप Actually, sir, okay, yeah, actually, sir, Bihar is my native place, and I spent my childhood in Bihar. Basically, I'm from West Champaran. So actually, there are so many friends who wish to pursue their PhD, who wish to pursue PhD in mathematics, but unfortunately they can't because at that time there was less number of faculties were less. So I wish to contribute in that direction. So this was the main reason. ओके, नहीं तो अभी नंबर ऑफ टीचर्स वहां पे कम थे, ठीक है, तो अभी आपकी जगह दूसरे ऑप्शंस आ जाएंगे और दूसरे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने पीएचडी नहीं किया होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं. आप तो आईआईटी में जा सकते हो. Of course, sir. But since it is my native place, so I will
do this job means very well, what I feel, and I will not look into the times or any constant that which will affect my job, which will affect my passion. So अच्छा, I ये will means what I feel, I बिहार will devote myself completely. This बिहार was the सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम बताओ जरा, क्या है? okay. So Education Minister is Professor Chandrasekhar. So in fact, he is also a professor and he is from Purnia district. ओके, Yes, sir. न्यू एजुकेशन And पॉलिसी के also बारे में he कुछ is, पढ़ा है आपने? yeah. So means not in detail, but yeah, few things I know is that so from 2023, so PhD will be mandatory for for university assistant professor. Suppose if someone wishes to be an assistant professor in university, so he must have some PhD degree, then he can go for this. And also there are so many rules and regulations, but right now, sir, I will look into the things. ओके, ठीक है. ओके, परविंदर सर, हाँ जी सर. यू कैन कंटिन्यू. हेलो. हाँ जी सर. Yes, sir. Hello, sir. तो सर आपने ये वेक्टर स्पेस सुना है आपने? Yes, sir. डिफाइन करेंगे आप वेक्टर स्पेस को? Okay. So vector space V is a non-empty set, okay, and we are imposing. So before vector space, we must have some field structure. That is, let F be a field. F be a field, okay, and then V is called then a non-empty set. Then a non-empty set V is called a vector space over F. So since since F is a field, so it will have two algebraic operation, namely addition and multiplication. Okay, so then V is called a vector space over F if we have the following thing, that is, if I'm taking any two vectors x and y from V, then x plus y again should be in the V. Okay. The second property is that if I'm taking it will satisfy the commutative things, that is x plus y will be equal to y plus x. And so okay, so before this vector space, it must have two operations. B is called a vector space over F with operation multiplication. चलिए आप एक और बात बताइए. इफ Yes, two v1 v2 are the two vectors subspace, then their intersection is also space or not? B1 and B2 are two subspace. Then their intersection will be definitely subspace. Intersection is definitely or not? Yeah, definitely it is a subspace. And their union? Yeah, so union has some problem. For example, I can give some example. So if you will look into the things, so let me take this vector, that is x-axis and y-axis. Please only tell me the only condition. What is the basic condition? If it is a union is subspace, then what is the condition? Only that's the point. Okay, so the main condition, that is W1 union W2 will be a subspace if and only if any one of them must be contained in other. That is either W1 should be contained in W2 or W2 should be contained in W1. Then it can be a subspace. That is the main condition. Okay, that's it. Of course. And okay, we could. एक और बताइए आप, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सुना है आपने? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर.
Yeah, I heard about it, but sir, actually, I feel Because confident in pure mathematics setup. okay, but your research paper is on based on the differential equation. I think that is the Yeah, coefficients. I of course, think. sir. But yeah. So actually, sir, that's why I joined such type of things. That is, I will get some inspire or sir, means I will get some suggestion from you. That is how to tackle such thing. Because if they will ask in a pure setup, means I will be more confident to tell them everything बिल्कुल because than मतलब to क्योंकि because my work is based on हाँ, this pure setup. That is, I'm working on the PD problem हम्म, with the analytical approach. It is not like going in a differential setup. That's why. okay, because whenever you find out the coefficients, then it must be a need. It may be asked that kind of questions by the panel, Of course, sir. interview panels. और one more thing, Okay. whenever you already said कि आप wave बना रहे थे like, तो जैसे waves के लिए आप बना रहे थे कि आप की मतलब कि कोई पॉइंट आउट फाइंड आउट करना हो, ठीक है, जैसे आप कह रहे थे किसी बॉडी के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम के लिए, तो उसके लिए मतलब आपकी कंडीशन जो आप बना रहे थे कि आपकी किसी ना किसी लैब से सेटअप तो होना चाहिए ना, मतलब विदाउट मैट लैब या विद लैब कोई ना नहीं, सेटअप नहीं, मतलब विदाउट उसके आप कैसे, मतलब आप कैसे इनपुट आ गई, आपको कैसे पता लगे दैट्स ओके और नॉट विदाउट I think software, without any software, you never tell what kind of wave will be produced. Yeah, sorry, sir. Can you repeat? Actually, there was some network problem. सर मैं मतलब बेसिकली मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे आप कह रहे थे कि आपके पास इनपुट प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके बाद आप वेव से आप वैल्यू निकालोगे, लाइक कोफिशिएंट्स निकालोगे, मतलब मेरे कहने मतलब अगर आप किसी लैब के साथ सेट होगा, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर होगा लाइक मैट लैब या कुछ भी एनीथिंग, तो उसकी जब तक आप वेव प्रोड्यूस नहीं करोगे, आप कैसे फाइंड करोगे या दिस वेव इज करेक्ट और नॉट? Okay, so basically, I need to tell my problem. Then it will create some good understanding. That is what I wish to say. Inverse problem. Okay. So I worked on this. Because So let me take some simpler. whenever Yeah. you given the example, then only based on this question is based on your example. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let me take one more example. That is qx of u is equals to grad of beta times grad of u p minus 2 into grad of u. Okay. And u at 0 comma x is equals to f of x u at okay, so del t u at 0 comma x is equals to g of x, and u at t comma x is equals to h of x. So where omega t, let omega is the subset of Rn. Okay, it is in some open set. Okay, and bounded. Okay, and then defining omega t like this: 0 t cross omega. In this, here x belongs to omega, here x belongs to omega, and here t comma x belongs to del 0 t cross del omega. Okay, so this is the problem on which I am working. Okay, so I have information about only these things. That is, at some initial stage, it has some function value fx. Okay, and if I'm taking del t u at 0, at time t equal to 0, we have gx. And similarly, at the boundary, we have These are the boundary conditions. ut. Yeah, so this I have only information about these things. Okay, okay. Based on these things, I am trying to find these coefficients, this q and beta. So this is my work, and for this I am using some analytical approach. Because आपके जो आपने जो एग्जांपल पहले दी थी ना, उसके अंदर आपने ये कुछ मेंशन कुछ अलग तरीके से किया था। यहाँ पे आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, बट जब आपने एग्जांपल स्टार्टिंग में दी थी ना आपने अपने वर्क के ऊपर, तो वो शायद एग्जांपल से सूट नहीं करती। तो आपने कहा कि दैट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ वेव बनेगी, तो मतलब कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब वो इससे कंसाइड नहीं कर पा रही। आई थिंक सो। Okay, so basically अगर इसका application मैं आपको बताऊं, so the main application is that suppose a man is using some seismograph. Okay, so this is the surface, and he is using a metal detector object. Okay, so inside this ground, inside this earth, so there are so many metals and liquids.
Okay, so he is passing some waves inside the earth, and then these waves are coming back to the surface after collision. Okay, we are passing some waves, means we are sending some waves from the surface, and then we are receiving the waves on the surface. Okay. So we have data only on at the surface, and based on the data given at the surface, we are saying, yeah, inside there is some metal, inside there is gold, or there is some liquid. So this is the mainly inverse problem. That is, we are passing Basically, some that is waves based on and radiations. like detector problem, like detect करना, how to find. Yeah. Yes, That sir, is yes, sir. yeah, So it is something like that. हाँ, That is we have information only about this fx, gx, and hx. That is at the boundary, and at time t equal to 0. ठीक है. Okay, जब आप initially we are passing the wave, and then इनिशियली we जब are आपने taking the एग्जांपल वहां पे response. की गड़बड़ हुई, तो वहां पे शायद कहीं आपने Yes, गड़बड़ sir. बताई, तो वही प्रॉब्लम सोच रहे कि वहां पे और यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो रहा है आपका, तो वो लगा मुझे एक थोड़ा सा. Okay. हम्म. Okay. Okay. So yeah, so that's why I joined this session. Which I will get some suggestion from both of you. Okay. This was the main reason. हाँ जी, त्यागी सर. हेलो सर. Yes, sir. हाँ जी सर. So, Mr. Kumar, Yes, sir. पीएचडी वर्क कर रहे हो, अच्छी बात है, बट जो टीचिंग की उनकी रिक्वायरमेंट है, थोड़ा उसके हिसाब से भी डालना है अपने आप को. कब है आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू है 2 तारीख को. हाँ, टाइम है ना अभी, तो थोड़ा सा मतलब जो सिलेबस होता है ना वहाँ पे, जो इंजीनियरिंग में, मतलब उस हिसाब से भी आपको एक्सप्लेन करना है. क्योंकि मैंने कहा आपको पढ़ाओ आपको टॉपिक, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में ना जाके ना, आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल्स को देखना है उनको, ओके. कि कितनी तो एक्चुअली सर सिंप्लिसिटी के साथ तुम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो. और दूसरा, जो Okay. तुमने पेपर, अगर तुमने मेंशन किया है कि मैंने 3 पेपर डाले हैं, भेजे हुए हैं, मतलब, तो पेपर पूछेंगे Yes, कौन sir. कौन से पेपर है. अब जो पेपर हैं तो उनके ऊपर Okay. बताओगे तुम, तो क्वेश्चन बन सकता है वहां पे. ठीक है, तो अपने आप को Okay. उन पे, मतलब जो जो तुम बोलने वाले हो, उन सब चीजों के लिए रेडी रखना पड़ेगा तुम्हें. समझ रहे हो? Okay. हाँ, Okay. जैसे अगर आपने वेव, खुद ही बोला ना आपने, वेव इक्वेशन का यूज करके कुछ करना है, तो क्लास में तो वेव इक्वेशन ही पढ़ानी है ना आपको. मान लिया डिप्लोमा वाले बच्चों को या इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाना है, तो वहां पे तो सिंपल तरीके से आपको वेव इक्वेशन को समझाना है. तो वो आपने नहीं किया. ठीक है, उस डायरेक्शन में थोड़ा देखो कि आप सिंपलिसिटी के साथ कैसे एक्सप्लेन करोगे. मतलब अगर तुम्हें मौका मिलता है एक्सप्लेन करने के लिए, कहते हैं वो. ओके. Okay, sir. ग्राफ तुमने बना दिया कोर्स Okay. का, तो कोई सिंपल जो जो तुम बोलोगे उसी से क्वेश्चन बना सकते हैं. मेन पॉइंट एक तो ये होता है. ठीक है. दूसरा, Okay. जनरल, मतलब कि इंट्रोडक्शन के लिए अगर वो बात करेंगे नहीं, इंट्रोडक्शन में एजुकेशन के बारे में, तुम्हारे वर्क एक्स के बारे में वो पूछेंगे. नाम तो शायद मना ही करते हैं वहां पे, ध्यान रखना इस चीज का पहले. ठीक है. तो अगर डायरेक्टली वो आते हैं कि भाई एजुकेशन डिटेल्स बताओ या अपने बारे में बताओ, तो उसी हिसाब से जी. अपना स्टार्ट करना है कि एजुकेशन के बारे में, और अगर कोई काम किया हुआ है तुमने उसके बारे में. Okay. ठीक है. और Okay. वेक्टर स्पेस के बारे में जैसे सर ने पूछा, तो वेक्टर स्पेस को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, सामने वाले के माइंड को स्ट्राइक करे. उसके बाद ये तुम टेक्निकल चीजें भी यूज कर सकते हो. टर्मिनोलॉजी जो है ना, बहुत सिंपल होनी चाहिए. Okay. हाँ, इंटरव्यू के टाइम पे वहां पे, ताकि उनको Okay. इंप्रेशन जाए कि हाँ यार, क्लियरिटी है. मतलब हमें रटी रटाई चीजें नहीं दिखनी चाहिए वहां पे ना. जी. हाँ. और आई कांटेक्ट को ध्यान से बनाना है वहां पे. यहाँ पे तो ऑनलाइन में तो थोड़ा दिक्कत रहती है. जी. और कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दे सकते हैं, बोर्ड पर खड़ा कर देंगे आपको, हो सकता है कि भाई यहाँ पे सामने बताओ एक्सप्लेन करके. तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है उसके लिए. कोई ज्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ज्यादा. बस तुमसे पूछेंगे, तुम जो बताते जाओगे उसी में से क्वेश्चन आते जाएंगे. Okay. सब्जेक्ट अगर तुमने प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से करने वाले हो बताओ. सर वैसे मैंने अभी प्रिपेयर कर रखे हैं, जैसे एनालिसिस कर रखा है. क्लियर एनालिसिस. एनालिसिस. जी. अच्छा, और ठीक है. कैलकुलस में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस. ठीक है. और अलजेब्रा को मैंने पढ़ रखा है. मतलब क्वेश्चंस वगैरह अगर वो पूछते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई टू आंसर देम.
चलो ठीक है। तो बेसिकली सर मैंने जो प्रिपरेशन किया सर वो प्योर सेटअप में किया हुआ है। तो बेसिकली सर मुझे यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब मेरा काम जो है ना सर वो एनालिटिकल अप्रोच है किसी इक्वेशन को, क्योंकि अब ये हाँ क्यूएक्स और बीटा ये जो कॉफिशिएंट्स है ये फाइंड आउट आप डायरेक्टली पीडी की हेल्प से करना मुश्किल है। तो हम नहीं, यहाँ पे कुछ वो एनालिटिकल आपने जो अप्रोच किया ठीक करते है हैं, ना। तो ये है। आप ये भी देखो, दो जी चीजें, एक तो आप जो कर रहे हो, जो आपने लर्निंग करी है, एक वहां डिलीवरी करनी है। जी। तो वहां किस चीज की हम्म। रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। ओके। मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी सर, जी सर। इंजीनियरिंग तो कॉलेज के सर अंदर अगर बच्चे हैं तो उनको क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है? अगर आप पढ़ाने कहाँ जाना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाओगे ना कहीं पे, जी जी तो उन बच्चों का सिलेबस चेक करो, उसके हिसाब से अपने आप देखो कि कैसे चीजों को एक्सप्लेन करोगे सिंपल वेज में। भाई आई बात समझ में? और जो आप तैयार जी। करके जाओगे उसके अलावा भी पूछ सकते हैं वो कहीं से भी ना। फिर प्रोजेक्ट से तुम्हारे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोजेक्ट से पूछ सकते हैं, पेपर से पूछ सकते हैं, वही पूछा मैंने। और जो तुम पढ़ के जाओगे वहां से भी पूछेंगे कुछ। ओके। तो तो सारी चीजों को सर रिवाइज कर लो। जी सर, तो एक्चुअली ना मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ना अब मैं जो पढ़ के गया, तो मैं कैसे उसको प्रेज़ेंट मतलब कैसे उनको बताऊँ कि वो उसी सेटअप में वो फ्लो करने लगे? मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ना मैंने रियल एनालिसिस, है ना? तो एंड रियल में बोल दो एनालिसिस जब आप बेसिक है, अगर कुछ मतलब स्टार्ट करेंगे ना डिस्कशन वो। कैलकुलस, मल्टी हाँ, वेरिएबल ये हाँ, मैंने तो आप पढ़ ये रखा है। टॉपिक्स के नाम मेंशन कर देना पहले कि मतलब आई नो ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बट माई ओके, आई हैव मोर कॉन्फिडेंस इन दीज टॉपिक्स। ओके, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो सिंपल वे में कि अभी मैंने ये टॉपिक की ओके, मेरी ज्यादा अच्छी कमांड है और इन पे मैंने वर्क किया हुआ है। ओके। और बाकी मैं पढ़ा कोई भी टॉपिक सकता हूँ। ठीक है, सारे जो भी इंजीनियरिंग में आते हैं, हुँ, तो किसी भी टॉपिक को मैं रिवाइज करके जैसे अगर रिक्वायर्ड होता है तो पढ़ा सकता हूँ आराम से। सबका आइडिया है मुझे अच्छे तरीके से। ये पॉइंट बोल देना आप सिंपल। ओके, ओके, ठीक है, ओके सर। तो फिर वो ओके, तो वहां से बेसिकली पूछना स्टार्ट करेंगे। फिर वो तुमसे आइगन वैल्यू ओके, निकलवाने के लिए आइगन वेक्टर के बारे में, वेक्टर स्पेस, कर्नेल, रैंक वो नलिटी सब वो सब थ्योरम, ठीक है ना, एडजॉइंट के बारे में, इनवर्स बिल्कुल। के बारे में, कहीं से भी पूछ सकते हैं फिर। ये सब मैंने पढ़ रखा है सर, इसमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट हूँ। मैं ना मतलब वही है, तो आपने जैसे बताया कि सर मैं पहले अपना एजुकेशन डिटेल अगर दे देता हूँ, वो पूछेंगे कि आपका एजुकेशन क्या है हाँ, और तो क्या उसके कर रहे बाद हो? ये टॉपिक, द ये पॉइंट मेंशन कर देना। ओके, कि सर मतलब आई एम इंडिकेट कर कॉन्फिडेंट देना इन उनको, दिस कोई टू। दिक्कत नहीं है कि भाई ये टॉपिक मेरे अच्छे हैं। ओके सर, हम्म। ओके सर, या सो आई विल टेल देम दैट इज़ आई और प्रिपेयर्ड घबराने की ऑल जरूरत दिस नहीं है, टॉपिक्स और एंड घबराना बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना, चाहे कुछ भी हो, मतलब कुछ अगर नहीं भी आता। कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे मैंने तुम्हें उस टाइम पे ऐसे प्रेजेंट किया कि यार तुम्हें ये भी नहीं आता है, मतलब तुम इस पे काम क्या किया तुमने, ऐसे भी बोल देते हैं कई बार वो लोग ना। जी, तो तुम उससे मतलब टेंशन मत लेना, मतलब परेशान मत होना, कूल रहना और अपना अगले जी, क्वेश्चन का इंतजार करना। ओके सर। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा तुम अटक गए, या तुम्हें ऐसा लगा कि यार ये मुझे इंसल्ट कर रहे हैं मेरी, ठीक है, जी, तो उसको दिल पे जी, नहीं लेना और ज्यादा उस पर सोचना नहीं। अगले क्वेश्चन का इंतजार करना जो तुम्हें आता हो, मतलब ऐसा कुछ पूछ रहे हो। ओके सर। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा कर देते हैं कई बार ना कि कुछ भी बोल देंगे ऊपर, इंटरव्यू वाले प्रोफेसर जो है वहां पे, कि अरे यार ये नहीं, तुम पेपर कैसे पब्लिश कर दिया तुमने। तो तुम वहाँ एकदम से मतलब होपलेस हो जाता है बच्चा ना। तो वो जी, होपलेस नहीं होना तुम्हें, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं कोई बात नहीं, जो बोल रहे हैं। और कई लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसे भी होते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन बंदा मिलता है। कई लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे, तुम्हें लगेगा कि यार, बट हाँ, अगर कोई तुम्हें बहुत सपोर्ट भी कर रहा है तो गारंटी कुछ नहीं होती कि वो तुम्हें सेलेक्ट करेगा वहां पे। ये भी ध्यान रखना। कई बार ऐसा भी होता है कि बंदा तुम्हारे साथ र्यूड है, लेकिन वो तुम्हें सेलेक्ट कर लेगा बाद में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, वो बस चेक करना चाहता है कि बच्चा कितना, क्लास के अंदर अगर चार पांच बच्चे कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर लें, इसको ना आता हो तो कैसे ये बिहेव करेगा वहां पे, कैसे हैंडल करेगा, वो सब देखना होता है ना। ओके, हाँ, बाकी नॉलेज तो तुम्हारी अच्छी है और एजुकेशन भी अच्छी है, तो चांस अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे होने के। थोड़ा सा सिंपल वे में समझाने की तरीका समझ लो। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। यही प्रॉब्लम है इनकी, कुमार की ना, हम्म। कि ना एक से मतलब टू द पॉइंट आंसर नहीं दे रहे, थोड़ा मतलब कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन में चले जा रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन भी वो बहुत ज्यादा हाँ,
टिपिकल हो जा रही है ना उसको। टिपिकल हो रही है, तो वो मतलब- एक्चुअली वो शायद वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो उस चीज को। और एक सर जैसे इन्होंने रियल एनालिसिस में ज्यादा फोकस कर रखा है, तो मतलब इनका डिफरेंशियल में भी थोड़ा फोकस होना चाहिए, मतलब लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है तो हाँ देखो, वहां इंजीनियरिंग पे मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस आता ही नहीं है, तुम्हें बताऊं। अप्लाइड ही चलता है सारा, तो उनको फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा उसमें। रियल को इंजीनियरिंग में कोई नहीं पढ़ता वहां पे, ये तो इसी में आता है केवल Okay. बीएससी एमएससी में। तो थोड़ा सा चैप्टर उधर के तैयार करो, देखो सिलेबस ये जैसे। ये Okay. डिफरेंशियल तो Actually, जी डेफिनेटली करके जाना आप, डिफरेंशियल, क्योंकि वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन सारी हाँ, आएंगी, हाँ, ये पक्का डेफिनेटली पूछेंगे। ओडीई और पीडी अच्छे तरीके से करो, हम्म। और ये करो जी अपना। ठीक है, जी सर जी। चलो ठीक है फिर, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके अभी एक ओके, ओके। बेस्ट ऑफ लक।